Yes, good morning, students. So once again, welcome back in social science subject live class for standard 8. Okay. So dear students, as all of you knows that currently we have started with a revision. Okay. Revision for our final examinations. Okay. So till we have already conducted, okay, 3 online assessments. So, as I told you also that your final examinations are going to start from 25th of March. Okay, so soon you will get the syllabus along with your timetable. Okay, the second thing, as far as concerned about the mode of the examination. Okay, beta. So we are planning to conduct your final examination in offline mode. Offline mode means all of you are supposed to come to school and write your examination here in school. Okay, but it entirely depends upon the COVID situation. Okay, so if the situation become worse, okay, it does not come in favor, then accordingly you will be informed. So यदि परिस्थितियां हमारे हिसाब से काम नहीं करती हैं तो उसके हिसाब से आप लोगों को क्या है, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. ठीक है, अदरवाइज एज ऑन टुडे आप ये मान के चलिए कि आपका 25th ऑफ मार्च से फाइनल एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है और वो एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड पर स्कूल में होगा. ठीक है, सो ये अभी तक का हमारा स्टेटस है. ठीक है, यदि और कोई चेंजेस आते हैं, है ना, सो अकॉर्डिंगली यू विल बी इन्फॉर्म. नाउ सो लेट अस स्टार्ट टू द रिवीजन. सो यस्टरडे वी हैव डिस्कस अबाउट द टू फैक्टर्स. ओके, and these two factors were time and technology. What are time and technology? So time and technology are the two important factors which change the substance into resources. ठीक है, तो टाइम और टेक्नोलॉजी ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट करते हैं, रिसोर्सेज में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, देन पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स. ठीक है, अब इतने सारे रिसोर्सेज में द ह्यूमन बीइंग देमसेल्व्स आर द इंपॉर्टेंट रिसोर्स. जो ह्यूमन बीइंग है वो स्वयं भी क्या होते हैं, एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं. So human being themselves are the most important resource. जो human being है वो स्वयं भी क्या है, एक important resource है. Why? Because it is the ideas, knowledge, okay, the inventions and discoveries done by the human being which finally led to the creation of more resource. It means without human beings, the available resources cannot be converted into resources, है ना. सो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स कौन है, ह्यूमन बीइंग. ठीक है, इट इज द आइडिया क्रिएटेड बाय द ह्यूमन बीइंग, द नॉलेज ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, ओके, द इन्वेंशंस एंड द डिस्कवरीज डन बाय द ह्यूमन बीइंग, द एफर्ट्स टेकन बाय द ह्यूमन बीइंग. तो कुल मिलाकर नेचुरली तो इस संसार में बहुत सारे सब्सटेंसेस अवेलेबल हैं, परंतु वो सब्सटेंसेस एज ए रिसोर्स कब आएंगे, तो वो सब्सटेंसेस एज ए रिसोर्स कब मिलेंगे हमको, जब हमने क्या किया है, व्हेन वी हैव, है ना, जब हमारे पास क्या है,
वो जो पर्टिकुलर रिसोर्स है उसको, उस सब्सटेंस को कन्वर्ट करने के लिए कौन अवेलेबल है? ह्यूमन बीइंग। सो कोई भी सब्सटेंस रिसोर्स के फॉर्म में कब तक नहीं आएगा? जब तक उसमें किसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा? ह्यूमन बीइंग का। ओके, सो दैट इज व्हाट अबाउट द टेक्नोलॉजी, ठीक है, और द रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग। नाउ द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, okay, is basically what? Types of resources, ठीक है। अभी जो हम आप डिस्कस कर रहे हैं वो किससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे बेटा? टाइप्स ऑफ रिसोर्स। ओके, सो रिसोर्सेज आर और कैन बी क्लासिफाइड, resources are or can be classified into natural, human made and human resources. Okay, so resources can or resources are generally classified. Okay, so resources are generally classified. Okay, and so resources are generally classified as, यानी resources को हम generally कैसे classified करेंगे? So resources can be generally classified as natural, okay, that is natural resources, got it, then human made resources and human themselves. Okay, now what does it mean? So जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज को हम जनरली तीन कैटेगरी में क्लासिफाइड करेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज, यानी दोज रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल टू अस बाय डिफॉल्ट इन नेचर। ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर में बाय डिफॉल्ट अवेलेबल हैं। तो दोज रिसोर्सेज आर कॉल्ड एज व्हाट बेटा? Natural resources. Those resources are called as natural resources. Okay, then human made resources. So what are the human made resources? Those resources which the human being made, and certainly the human being made the resource by using the available natural resource, ठीक है। सो इंसान ने नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके जो रिसोर्स बनाएगा वो क्या कहलाएंगे बेटा? ह्यूमन मेड रिसोर्स। एंड द ह्यूमन बीइंग देमसेल्व्स आर द ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग जो है वो खुद भी क्या होंगे? रिसोर्सेज होंगे। व्हाई? बिकॉज इट इज द स्किल, effort, ideas, entrepreneurship taken by the human being. इंसान की जो एफर्ट्स हैं वही इंसान को क्या एक ह्यूमन रिसोर्स के रूप में कन्वर्ट करते हैं। So resources that are drawn from nature and used without much modification, they are called as natural resources. Okay, so resources, okay, what? The resources that are drawn from nature, resources that are drawn from nature. Okay, so what? The resources that are drawn from nature and used
and used without much modification. Okay, I am again repeating, resources that are drawn from nature and used without much modification, ठीक है, are called, what are they called? They are natural resources, ठीक है बेटा. So this is the definition which is important as far as concerned about your examination. तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस फर्स्ट चैप्टर में जितने भी डेफिनेशंस दी हुई हैं, है ना, एंड इफ यू आर हैविंग योर टेक्स्ट बुक, ओके, यदि आपके पास टेक्स्ट बुक होगी, सो द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, ठीक है, जैसे इस डेफिनेशन का इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है? नेचुरल रिसोर्स. समझ में आ रहा है? सो इस डेफिनेशन का इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है? नेचुरल रिसोर्स. इसी तरीके से इस चैप्टर में वी आर हैविंग नंबर ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है. सो ये जितने भी डेफिनेशन से बेटा, all these are given into your textbook in blue color, है ना, ब्लू या स्काई ब्लू कलर से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रिंटेड हैं, ठीक है. सो रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर, ठीक है, these are called as what? Natural resource. Okay, so what are the examples of the natural resource beta? The air we breathe, the water that is available in our rivers, lakes, ponds, sea and ocean. Okay, the soil and minerals. So everything available in nature is what? A natural resource. Many of these resources are free gift of nature and it can be used directly. मैक्सिमम जो रिसोर्सेज हैं, है ना, इसमें से बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं which are free gift of nature. ना रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर मतलब इसमें से मैक्सिमम रिसोर्स हमें नेचर में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, कोई कीमत चुकाने की जरूरत नहीं, ठीक है. इन सम केसेस द टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू यूज अ नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे. परंतु कभी कभी कुछ रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करने के लिए व्हाट वी रिक्वायर्ड टूल्स एंड टेक्नोलॉजी. तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है? टूल्स और टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, ठीक है. गॉट इट? नाउ अगेन द नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ओके, सो द नेचुरल रिसोर्सेज, what? Natural resources. Okay, so we can or we have the classification of natural resources into two categories. Okay, so what are the two categories? Natural resources को हम दो कैटेगरी में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं. Okay, so what is these? The categories are renewable resources. What is the category? The category is renewable resources. Okay, so renewable resources and non-renewable resources. ठीक है. So what are the two categories? Natural resources. So natural resources can be classified into
two more categories. What are these two categories? Renewable resources and non-renewable resources. Okay, all of you have a very good idea beta about what are the renewable resources and what are the non-renewable resources. Okay, so the renewable resources are those which get renewed or replenished quickly. ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जो यूज करने के बाद तुरंत नेचर में, प्रकृति में हमें दोबारा जल्दी से अवेलेबल हो जाते हैं. सो रिन्यूड मीन्स नया मिलता चला जाएगा. ठीक है, सम ऑफ द रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड इन नेचर एंड दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज. ठीक है, कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैसे हैं बेटा? लिमिटेड हैं. फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी. So solar energy is a unlimited resource. Okay, the activities done by the human being is not going to affect the quantity of solar energy that we receive. ठीक है, same is the case of what? The wind energy. Okay, so the activity done by the human being, हम जो कर रहे हैं, है ना, हमने फैक्ट्रीज लगाई, ये किया, वो किया. ठीक, सो ऑल दीज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू अफेक्ट द क्वांटिटी ऑफ विंड. गेट इट? ओके, सो द केयरलेस यूज ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ओके, लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक. तो कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जहां पर हम उन्हें किस प्रकार से यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बट देयर आर मेनी रिन्यूएबल रिसोर्सेज. बहुत सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे हैं जो रिन्यूएबल तो हैं, बट इफ वी डू नॉट टेक केयर अबाउट द प्रॉपर यूज ऑफ द रिसोर्सेज, यदि हम इन रिसोर्सेस के प्रॉपर यूज को लेकर के केयर नहीं करेंगे, देन व्हाट हैपेंस इन दैट कंडीशन, ओके, वी मे फेस द प्रॉब्लम. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ वाटर. सो वाटर इज सर्टेनली a renewable resources. Okay, all of you might have studied the same thing in science, है ना, where you might have studied about the water cycle. Okay, so water is a renewable resource because we again get back the water through water cycle. Okay, water क्या है? renewable resource है, क्योंकि वाटर जो है हमें दोबारा किससे मिल जाएगा? वाटर साइकिल से दोबारा वाटर हमें मिल जाता है. ठीक है, बट still we sometimes observe that the areas are facing the scarcity of water. Okay, so though water is resources, the water is a renewable resource, but still we listen number of times, okay, we come across the news number of times that the different areas are facing scarcity of water. Now, why is it happening? Why the different areas are facing scarcity of water? So the basic reason behind this is what? The basic reason behind this is related to mismanagement of the water resources. And because of that, though water is a renewable resource, ठीक है, वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है, इसके बावजूद भी हम उसको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज नहीं करेंगे. ठीक, देन सेकंड क्लासिफिकेशन इज व्हाट? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ओके, सो व्हाट आर द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज व्हिच हैव ए लिमिटेड स्टॉक.
जिनकी अवेलेबिलिटी ही कैसी है, कम है, ठीक है, जिनकी अवेलेबिलिटी कैसी है, कम है, ठीक है। तो जब रिसोर्सेज बहुत कम क्वांटिटी में अवेलेबल है, then this is what a renewable resource. Okay, so renewable resources have a limited stock. Okay, renewable resources are a limited stock. It means that once the stock is exhausted, स्टॉक मतलब जो आज हमारे पास में है, एग्जॉस्टेड मतलब खत्म हो गया, तो एक बार यदि ये स्टॉक खत्म हो जाएगा, देन व्हाट हैपेंस, आइदर इट मे नॉट बी रिप्लेनिश्ड, या तो वो वापस आएगा ही नहीं, और इट टेक 1000 to 10,000 years to get replenished, या तो वो स्टॉक ही वापस नहीं आता, या उसको रिप्लेनिश होने में 1000 से 10,000 साल ज्यादा लग जाएंगे, ठीक है। नाउ दिस पीरियड इज मच मोर देन द ह्यूमन लाइफ स्पैन। इंसान की जिंदगी कितनी लंबी है उसके हिसाब से 1000 साल, 1200 साल, कई बार तो जैसे फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ द पेट्रोलियम एंड कोल रिसोर्सेज इट मे टेक मिलियंस ऑफ इयर्स। Okay, so we are calling these resources as a non-renewable resource. Okay, got it? Now, so coal, petroleum and natural gas. So these are what the examples of non-renewable resources. Okay, now the next line which is important is what? It is about the distribution of natural resources. Okay, so the distribution of natural resource. Okay, the distribution of, sorry, okay, so the distribution of natural resources, the distribution of natural resources. I am again repeating. Okay, so what is it? The distribution of natural resources. Okay, the distribution of natural resources depends upon the distribution of natural resources depends upon many factors. Okay, many factors like terrain. Okay, the distribution of natural resources depend upon many factors. Now distribution of natural resources मतलब कि इस पूरे अर्थ पर, पृथ्वी पर अलग अलग एरियाज में रिसोर्सेज कैसे हैं, अलग अलग अवेलेबल है, यानी कहीं पर एक रिसोर्स अवेलेबल है तो दूसरा नहीं है, ठीक है, दूसरा रिसोर्सेज अवेलेबल है तो तीसरा नहीं है, क्वालिटी और क्वांटिटी में फर्क है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन की कहीं पर रिसोर्सेज ज्यादा है, कहीं पर कम है, ठीक है, तो वो क्यों होता है? The reason is it depends on many factors like terrain, climate and altitude. Okay, so the distribution depend on number of factors. किसी भी स्थान पर, किसी जगह पर, ठीक है, रिसोर्सेज किस तरीके से अवेलेबल है ना, कितनी क्वांटिटी है कि नहीं है, whether one resource is available or not or another is available or not, वो किस पर डिपेंड करता है? So the distribution of natural resource depend on terrain. terrain मतलब जमीन कैसी है ना,
टेरियन मतलब जमीन कैसे है, क्लाइमेट मतलब वहां के मौसम की कंडीशन क्या है, और एल्टीट्यूड मतलब हाइट। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल द माउंटेनियस रीजन ऑफ द नेशन, सो माउंटेन्स हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज, प्लेन एरिया है डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज, प्लेट्यू रीजन ऑफ द कंट्री हैव अदर टाइप ऑफ रिसोर्स। ठीक है, तो जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है वो डिपेंड करती है किस जगह पर कैसा रिसोर्स अवेलेबल है। तो वो किस पर डिपेंड करेगा, इट डिपेंड अपॉन दीज फैक्टर्स। गॉट इट? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल। अब रिसोर्सेज अनइक्वली डिवाइड है। अनइक्वली डिवाइड मतलब some places have more quantity of the resource, other places have less quantity. Sometimes it happens that in one part of the world a particular resource is available, but in another part of the world it is entirely not available. So why it is happening? The reason is the distribution of resources is unequal because these factors differ so much over the तो डिस्ट्रीब्यूशन किस पर डिपेंड करेगा? तीन फैक्टर्स पर, टेरियन, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड। अब ये तीनों फैक्टर अर्थ के अलग अलग हिस्सों में कैसे हैं? डिफरेंट हैं। तो जहां जैसा डिफरेंस होगा अकॉर्डिंगली क्या होगा? देयर इज अ डिफरेंस इन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। ओके, सो द रिसोर्सेज can be classified into three categories. Okay, what are these? Natural resources, human-made resources, and human resources. Okay, the natural resources can be classified again into two categories. What are these? Renewable resources and non-renewable resources. Okay, so next classification is what? Next classification is human made resources. Okay, so what are human made resources? Okay, so human made resources are those resources, human made resources are those resources which are, okay, so human made resources are those resources which are made by, okay, so human made resources are those resources which are made by human beings, which are made by human beings by converting okay, now this is most important, by converting natural resources into utility products. Okay, now this is the most important thing. What is it actually? The human made resources are those resources which are made by human beings. सीधा है कि किसने बनाया है? ह्यूमन बीइंग ने बनाया है, परंतु कहां से बनाएगा? ठीक है, बनाएगा कहां से? So what the human being do actually? By converting natural resources into utility product. So human being नेचुरल रिसोर्सेस को इस तरीके से कन्वर्ट करता है कि वो नेचुरल रिसोर्स एक यूटिलिटी प्रोडक्ट मतलब किसी काम की वस्तु में चेंज हुआ। जब वो किसी काम की वस्तु में चेंज हो गया तो अब वो क्या कहलाएगा? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाएगा। ओके,
सो पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज, ओके, सारे के सारे अल्टीमेटली क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। बस फर्क क्या है कि ह्यूमन बीइंग उन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके, यानी नेचुरल रिसोर्सेज की उपयोगिता या यूटिलिटी क्या करेगा, चेंज करेगा। ओके, सो वी हैव नंबर ऑफ थिंग्स लाइक बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी, व्हीकल्स, everything is a human made resource, and the technology developed by the human being is also a human made resource. Okay, then next is human resource, है ना। अगली चीज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, human resource. Okay, so what is the meaning of human resource or human resources? Okay, so human resources are human being themselves. Okay, human resources are human being themselves, ठीक है। तो जो इंसान है वो स्वयं क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है। when they have the knowledge, when they have knowledge, when they have knowledge, okay, when they have skills and the technology to do so. Okay, so human resources are human being themselves. इंसान स्वयं क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है। पर वो ह्यूमन रिसोर्स, बेटर ह्यूमन रिसोर्स कब बनेगा, कब, when they have knowledge, जब उसके पास क्या होगा, नॉलेज होगा, पढ़ेगा, लिखेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा। स्किल्स मतलब किसी भी काम को अच्छे से करने का उसके पास हुनर होगा। एंड when they have the technology, ठीक है। So when the human being has all these things, then the human being themselves are the human resources. Okay, so improving the quality of people's skill, ठीक है बेटा। एक और डेफिनेशन है, and this would be the last that we'll discuss today, and the definition is what, human resource development. What is it about? Human resource development. Okay, so improving the quality of people's skill so that they are able to create more resources is known as human resource development, ठीक है। तो एक आपको क्वेश्चन आएगा, डेफिनेशन आएगी, what is human resource development? Okay, so what is the human resource development? Improving the quality of people's skill, लोगों की स्किल को, लोगों के काम करने के तरीके को क्या करना, डेवलप करना, ठीक है। सो दैट दे कैन क्रिएट मोर रिसोर्स, तो लोगों की एबिलिटी को बढ़ाना, लोगों की क्वालिटी को बढ़ाना, स्किल को बढ़ाना, ताकि लोग क्या कर सकें, दे कुड क्रिएट मोर रिसोर्सेज। ओके, सो दिस डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स is what, the human resource development. Got it beta? So that's all for today, life class friends. Okay, we'll continue this revision in coming classes. Okay, so thank you once again. Goodbye.